Okay, so let's begin. आज हम जो है वो स्पिन को इंट्रोड्यूस करेंगे एंड देन स्पिन स्टैटिस्टिक्स थ्योरम और जो स्पिन का इम्पैक्ट है एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर उनकी बात करेंगे. We will discuss helium atom and devise a way of including spin into multi-electron atoms. Okay, so I'm sure most of you are already familiar with the concept of spin. So my introduction would be, just for the sake of completeness, that we have everything covered in this course. So it would be just a quick overview. So historically, spin, came into picture through Zeeman effect, that people saw that if they have a gas which is, radiating, and if they put it in a magnetic field, its lines are split, and there were, and when the quantum theory also was developed in 1920s. Uh, we use spin there as well, but it actually originated because of that, because of the fine structure that we see in the spectrum of light emitted by different atoms. That's how it came into. Schrodinger last experiment was also an experiment that established this idea, but that was not the first that said, okay, there has to be some spin, because spectroscopy was actually older than that kind of thing. And when quantum mechanics, was developed, initially people tried to explain that splitting of lines because of, the interaction of different orbits with the external magnetic field, but that couldn't explain everything. Because we will see actually later on as well that we can have the coupling of the orbital angular momentum to external spin, external magnetic field, because that is also L dot B. आपने उसने तक किसी कोर्स में देखा हो. And then on top of that, there's fine splitting of lines, which is B dot, the spin angular momentum. So that's how it came into picture. But it was systematically derived by Dirac when he developed the relativistic quantum mechanics, and it naturally comes out, as one of the property of a particle. But since we are studying, and in most of the courses we are concerned with non-relativistic quantum mechanics based on Schrodinger equation, in that picture, the spin doesn't arrive from anywhere. The orbital angular momentum actually arises naturally when you solve a potential which is spherically symmetric, and then you see that the del square operator can be written as something which is partial square by partial R square plus an operator which is proportional to L square. So orbital angular momentum arises naturally, but the spin angular momentum has to be added artificially as a postulate into non-relativistic quantum mechanics, which we will be doing. So it actually shares many of the similar things with the orbital angular momentum. So there, and it is introduced, as a property which is an observable of the spin operators. Let's say the magnitude square, SZ, SY, SX operators, and you can specify their commutation relations like XYZ, or we can have YZX or ZXY and so on. Exactly, in the same fashion as the orbital angular momentum. And then since S square commutes with all these three of them, we can construct the eigenfunctions which are the simultaneous eigenfunction of S square
and any one of these. And by convention, we can choose S square and SZ. So let's say we have some function G to represent the spin. And if we apply S square, we have an eigenvalue, let's say written like this. And if we apply SZ, we have an eigenvalue like this. So this is the Z component of spin momentum, and this is the magnitude square in essentially the same way, where ms goes from minus s all the way to s, just like arbitrary angular momentum. And the values of this s and ms, they are found experimentally for particles, and for electron we know that s is half and ms is minus half and plus half. Okay, so since for electron ms has two values, plus half and minus half, it means that we have two eigenvectors that satisfy this equation. And let's say alpha satisfy this equation, that this is for plus half, and let's say there's an eigenfunction beta, which is eigenfunction of sz with eigenvalue minus h cut by half. And for both of them, the s square is going to be, since s is half, so half plus 1 is 3 by 2, so it's 3 over 4 alpha, and s square beta is also 3 over 4, like this. So this alpha is an eigenfunction, is a spin eigenfunction with the z eigenvalue plus half, and beta is the eigenfunction with the minus half, and they both have the same magnitude square, 3 over 4 h bar square. And let's try to guess the functions alpha and beta that they should satisfy. We can impose this condition normalization. So let's say this alpha is some function of ms, where ms goes from minus half to half. So we can have one normalization condition this, and similarly on beta, we can require beta to be normalized as well. We don't know what beta is yet, but whatever it is, it should have this property. And instead of integral, I'm putting sum, because this is their function of a discrete variable which only has two values. Okay, so if we have like this, then let's say a general wave function psi x, y, z, ms, which now have spin included as well. In general, by the way, I will be writing it as q. So when I write q, it means q is x, y, z, ms. So when I have, let's say, two electron, I will have q1 and q2. q1 would be x1, y1, z1, ms1. q2 would be x1, y1, x2, y2, z2, ms2, and so on. So this q will represent all four variables. So as you know, sort of the basis function, we can say that this is function of product of spatial and the spin part. And the reason is this, that if you recall from our first lecture, our Schrodinger equation was like this. So if psi is function of x, y, z, ms, and this del square and v, they only depend on x, y, z. So it means that this Hamiltonian, it doesn't operate on ms. So it means that psi can be broken down into two parts. One part is x, y, z, and the other independent part is a function of ms. So because of the independence of the Hamiltonian of ms, we can
write this wave function as a product of the two. अच्छा मैं इसमें एक चीज जो है ना वो वाजे कर दूं. Some of you might think, okay, this is a very accurate representation of an electron around a nucleus, even for hydrogen atom. But this is actually very inaccurate. We have, neglected many things if we talk about spin. So, for example, one thing that is missing from here is the spin orbital interaction. Because if electron has spin, let's say, so this electron, the spin can actually interact with the orbital angular momentum. That's called LS coupling. And also we have neglected the spin-spin interaction of electron and proton, because a proton is also an elementary particle with a spin. So we have neglected the spin-spin interaction as well, if you're just talking about hydrogen atom. And if you have, a helium atom, then in general, when you extend it to a Hamiltonian of helium atom and in the similar form, then we are neglecting many things: spin-spin of electron, spin-spin of nucleus and electron, and then spin orbital, and actually nucleus spin can also interact with the orbital angular momentum of electron. So there are a lot of things that have been neglected when we assume that the spin is also there in writing this equation. So this is accurate only up to the part where we do not consider spin. So if we have spin, even this Hamiltonian is inaccurate. However, if we consider spin but still think of our Hamiltonian like this, then for hydrogen atom, I can write the wave function as product of the two. And if we include spin inside the Hamiltonian as well, then in general this may not be true. But anyway, for this one, let's say it's like this. Then the usual normalization condition that we write like this, where this, d tau is an integration over all four variables. And we say this is one, this actually means this, that our ms goes from -half to half. GD? Sorry? Thank you. So when we have this, so this essentially translates to like this. So we have integration with respect to spatial coordinates. Spatial mean x, y, z, and then a sum over the spin coordinates. So this is the normalization condition now when we have spin as well in our wave function. And in general, the spin can have both alpha and beta. So in general, so if this is one, then the spin part of the wave function should add to one, which means that let me write this G as sum of two. So suppose G is sum A alpha plus B beta, then G mod square is, alpha. And since these alpha and beta are eigenfunctions of the same operator, they are orthogonal. Since these are eigenfunctions with two different eigenvalues, so both of these eigenfunctions are orthogonal. So the cross term has gone away. So essentially, I have assumed this thing, that alpha conjugate beta. So this I'm assuming 0. Similarly, beta star into alpha 0, because they're both orthogonal function, since they are eigenfunctions of the same function.
जी जी. So normalization हमारी होती है कि the integration, the total probability of finding particle anywhere with any properties, should be one. Okay, so that's what that normalization condition says, that the total probability should be one. क्योंकि इससे पहले normally कम से कम इस course में we were just concerned with the spatial coordinates. So our normalization condition was this. That this is equal to 1. So that was all we were concerned with. We didn't have spin. So physically, this means that we have an electron. So it has a probability of 1 of being found anywhere in the universe when we are integrating from minus infinity to infinity. ठीक है. अब ये जो spin वाला भी है, से हमने अब ये कह दिया कि we have an electron and it has a probability of 1 being found anywhere in the universe with either a spin half or a spin minus half. हाँ, क्योंकि ये essentially वो जो integration over ms है, it's just the sum. ये भी तो sums ही है ना सारे, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि आप इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे होने की probability find करें, यहाँ पे होने की करें, यहाँ पे probability, यहाँ पे, and then you add all the probabilities and it should be 1. ठीक है. तो इसी तरह when you add spin as well, so the electron can be found here and it can either have a probability of 1 or minus 1, 1 half or minus 1 half and so on. So it essentially means that if we have a single electron and it could be somewhere with certainty in the whole universe, and with certainty would either have a spin half or minus half. Okay, so spin को आप in this sense essentially you can think of another degree of freedom. So in just like 3 coordinates. All right, so this means that now this should be 1, and since this alpha mod square beta mod square, its sum is 1, so this essentially means this one, which we already know because this is normalized, this is normalized. Now the question is, what could be the eigen, could be the eigenfunction that we can choose that satisfy all of these properties? And the choice is very simple. We can choose alpha as a delta function, as a Kronecker delta function with ms half. Let me see if it is ms half or minus half. So this is half, and then beta is also a Kronecker delta function, ms minus half. And just to recall, Kronecker delta function is 1 when I is equal to j, and it is 0 when I is equal to not equal to j. And if you see, if we choose alpha and beta to be this, it satisfies everything. It satisfies this sum as well. Right? क्योंकि इस सम के अंदर 2 टर्म्स होंगी ना, अल्फा ऑफ ms हाफ और अल्फा ऑफ माइनस हाफ, और जब ms हाफ है तो अल्फा ये फंक्शन आपको 1 दे देगा, जब ms माइनस हाफ है ये फंक्शन आपको 0 दे देगा, which is indeed 1. Similarly, beta satisfies this thing as well, and they also satisfies this orthogonality relationship as well, because when ms is minus half, जो फर्स्ट टर्म है प्रोडक्ट के अंदर, ms माइनस हाफ पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और जब ms हाफ होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बट देयर प्रोडक्ट इज स्टिल 0, सो दोनों टर्म्स का सम जो है 0. So this choice of alpha beta satisfies the orthogonality normalization as well, like this, and yeah, these are the 2 things that we require. All right, so these are the choices of alpha and beta, and they also make our life simple, that when
ms is half, alpha is 1, and beta is 0. And when ms is minus half, this is beta is 1 and alpha is 0. All right, so let's now see what impact does it have on the electron distribution. For that, let's recall your basic knowledge of identical particles. So we know that classically identical particles are distinguishable. We can tag them, we can track them, because we can watch every particle individually where they were going. So each particle is distinguishable. But quantum mechanically, particles are not distinguishable in general, because when they're close by, we can't really track each particle individually. So our math should reflect this physical reality, that our wave function should have the properties, observable properties, that are invariant to the exchange of identical particles. For example, if we have electron 1, electron 2, electron 3, electron 4, electron 5, and so on, if we interchange the two electrons, our observables shouldn't change. And what are our observables? Probabilities of finding the electrons in some position, and everything else actually comes from this single observable. So essentially our psi mod square shouldn't change. So it means if we have some, let's say, wave function, which is function of Q1, Q2, let's say there are some n electrons. So Q1 mean that now I'm identifying each electron with its spatial and spin coordinates. So we're now including spin as well. So it means that when I interchange any of these two particles, my psi mod square shouldn't change. And to do it systematically, let me introduce some operator which we call exchange operator, Pij, that when it operates on this wave function, it interchanges some ith and jth electron with each other. So this ith particle, let's say there is some ith and jth, this becomes jth, and jth becomes ith, and that's all. And one thing we can see that we should have our psi exactly return back to us if we apply this Pij square again. Okay, so we should get our psi back like this. कि अगर आप I और J को इंटरचेंज करें और उससे जो भी लेट्स से psi प्राइम बनती है वो लिखें, लेकिन वो psi प्राइम ऐसी होनी चाहिए कि उसमें अगर आप IJ को दोबारा से इंटरचेंज करें, you should get exactly the previous psi that you started. So in addition to the invariance of the probabilities, we have this invariance of the wave function itself if we exchange the particles twice. So this means that this Pi, if we think of this operator Pij, this should be identity, which means that it has, its eigenvalues plus minus 1, but let me do it systematically. Suppose when we apply this Pij, we get, C times some psi. So this is equal to some C times psi. And then when we do it again, we get this C square. So since this has to be equal to psi, it means that C square has to be 1. And this is only possible if C is either plus 1 or minus 1. So it means that our exchange operator, when it operates on psi, we should get the wave function back either with plus 1 or minus 1.
So there are two possibilities for our wave function. So since there are two eigenvalues, when we apply Pij, then there are two eigenfunctions. So let's call one eigenfunction as psi plus, which gives psi plus back. And let's call the other eigenfunction psi minus, which gives psi minus, which gives us minus psi minus. So this means के जो हमारा wave function है, जो अब जो क्वांटम मैकेनिक्स में अलाउड वेव फंक्शन है, वो सिर्फ दो तरह का है. और एक वो है जो सिमेट्रिक है अंडर पार्टिकल एक्सचेंज, और एक वो है जो एंटी सिमेट्रिक है अंडर पार्ट. और ये जो वैसे बाय द वे चॉइस ऑफ वर्ड है ना, थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि सिमेट्रिक का मतलब हम और भी लेते हैं. जैसे वो इवन ऑड फंक्शन के हवाले से हम लेते हैं कि ये सिमेट्रिक है अराउंड ऑरिजिन, या एंटी सिमेट्रिक है अराउंड ऑरिजिन, इवन ऑड कहते हैं. तो यहाँ पे जो सिमेट्रिक का मतलब है वो ये है कि इट रिमेन सेम अंडर पार्टिकल एक्सचेंज. और एंटी सिमेट्रिक का मतलब है इट गिव्स यू अ माइनस साइन अंडर पार्टिकल एक्सचेंज. ठीक है. तो एनीवे देयर आर दीज टू टाइप्स ऑफ वेव फंक्शंस. सो जब भी हम वेव फंक्शन किसी collection of particles का लिखेंगे, we have to make sure that our wave function satisfy this property. के अगर तो probabilities को देखें तो इसका मतलब है जो probability distribution है, it's either going to be symmetric or antisymmetric under particle exchange. ठीक है. So identical particles whenever they are जिस तरह की भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्पेशली पता नहीं सिमेट्रिक है कि नहीं है, लेकिन अगर आप लेट से वो यूं करके है तो इस पार्ट एक ये पार्टिकल इधर एक इधर है, इफ आई इंटरचेंज देम सो दिस गोस हियर, सो द रिजल्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी आइदर सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक. सो चूंकि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करें तो वो मॉड स्क्वायर है, तो ये उसमें ये साइन तो चला जाएगा, लेकिन दिस साई इनसाइड this will remain the psi mod square will come out to be the same for both. लेकिन जो wave function है it can either be like this or something like this. The wave function is going to be symmetric or anti-symmetric, and this has real consequences. We'll see in a while. Okay, तो ये हो गया. अब एक और चीज देख लेते हैं, वो ये है कि अगर फर्ज करें अब दो दफा इंटरचेंज करते हैं, लेट्स से आप इस पार्टिकल को इस पार्टिकल से इंटरचेंज करते हैं और इस पार्टिकल को इससे कर देते हैं. सो यू अप्लाई टू एक्सचेंजेस. तो अब वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए? शुड इट गिव अ माइनस साइन और अ प्लस साइन? प्लस आना चाहिए, क्योंकि डजंट मैटर कि वेव फंक्शन ये है, अगर दो दफा इंटरचेंज करते हैं यू शुड गेट प्लस. तो इसका मतलब है कि अगर आप दो दफा करते हैं यू शुड गेट ऑलवेज प्लस. अगर एक दफा करते हैं तो देयर इज द टू पॉसिबिलिटीज, आइदर प्लस और माइनस. अब सवाल है कि अगर आपके पास एक कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं तो ये वाला वेव फंक्शन हो या ये वाला हो. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल. Experimentally people observed that some particles follow this wave function and some particles follow this wave function, and it actually correlates nicely with the values of spin. So people have observed that if the spin s is either 0, 1, 2 or integer multiple of h cut, then the wave function is symmetric under particle exchange. And if the spin is a half integral multiple of h bar, then it follows the antisymmetric wave function. So just to give you examples, electron, proton, neutron, muon, and many other elementary particles, they follow this statistics. Photons and some other particles, they follow this one. But more than that, actually, when you have composite particles, for example, look at the helium nuclei, alpha particles. Okay? So let's say you have a soup of alpha particles, just nuclei. So
When we interchange two nuclei with each other, we are interchanging we are implementing 4 exchanges of fermions. क्योंकि इसमें 2 protons हैं और 2 neutrons हैं. दोनों proton fermion है, दोनों neutron भी fermion है. So these are called fermions and these are called bosons. So जब 4 fermions को करते हैं तो you should get -1 power 4 जो साइन है, क्योंकि 2 को करेंगे एक -1 फिर दूसरे 2 को, तो इसका मतलब है इनको अगर हम करते हैं तो our wave function shouldn't get a plus minus and should get a plus sign. So these alpha particles behaves as bosons. इनका जो अगर आप वेव फंक्शन लिखेंगे यू हैव टू मेक श्योर दैट इट्स अ सिमेट्रिक वेव फंक्शन. अगर फर्ज करें आप कोई ऐसे न्यूक्लियर इंटरचेंज करते हैं जिनमें ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, then that soup will behave as a collection of fermions. But it boils down to this thing. So आपने देखना इंडिविजुअल पार्टिकल्स को, अगर आप इवन नंबर ऑफ fermions को इंटरचेंज करेंगे so your wave function should give you plus sign. If you interchange odd number of fermion, your wave function should give you minus sign. And if you have boson, then it doesn't matter. जितने मर्जी boson interchange करें, you should always get a positive sign. This spin is still like a fraction term, right? So how does the spin relate to the nature of being particle? Sorry, मैं आपका question नहीं समझा. Again, there's the bargaining like you possible in the boson, हाँ. fractional looking. The helium atom is a standard in fractional terms. जी जी जी. But there's still हाँ, लेकिन वो सिंपली ये है कि आप जैसे यहाँ पे बात कर रहे थे, अगर आप 2 फर्मियान को इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस साइन इधर से आ गया. अगर मैं इन 2 करता हूं एक माइनस साइन इधर से भी आना चाहिए, तो अब टोटल साइन क्या होगा? प्लस. तो क्योंकि आपने जो 4 फर्मियान हैं उनको आपस में इंटरचेंज किया, तो यहाँ पे 8 करेंगे, 4 इधर आएंगे 4 उधर जाएंगे, तो वो -1 की पावर 4 होगा, तो इसलिए प्लस हो जाएगा. सो आप मैंने बड़े केयरफुली लफ्ज बोला, दे बिहेव लाइक बोसॉन्स. ठीक है, देयर वेव फंक्शन, क्योंकि दे इट इज सिमेट्रिक अंडर दिस एक्सचेंज. Okay, so and since we are going to deal with electrons for the rest of this course, so our wave function that we would be choosing will have to satisfy this property, that their wave function has to be antisymmetric under the exchange of 2 electrons. Any other question? Okay, so let's now go back and revisit some of the things that we have done earlier. Let's go back to hydrogen atom. So in hydrogen atom, we have already solved this problem, and we figured out that our solutions of the Schrodinger equations, we can, write them as 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz, 3s, and so on. And since we have only 1 electron, let me just write in bracket 1. Even though I don't need to do it for hydrogen atom, but just for the notations later on. So these are the solution of the Schrodinger equation for hydrogen atoms. And we said that degeneracy is n square. So this is n. So it means that for this n is equal to 1, it has only one solution. For n is equal to 2, it has 1, 2, 3, 4 solutions. 2 power 2 is 4. So for n is equal to 3, it will have 9 solutions, right? 3s, then 3px, 3py, 3pz, and then 5 types of d orbitals, dxy, dy, and so on. So 5d, 4, 3px, and 1 this, and so on. Now let's see if we have spin included. So after spin,
Our solutions are now of this type. 1s1 G, where G, could be alpha or beta. So I now have alpha 1 or beta 1. So for n is equal to 1, we now have two possible solutions of the Schrodinger equation. One with the spin alpha, the other with spin wave function alpha, and the other with spin wave function beta. So this is now a state with the spin half, and this is a state with spin minus half. But n is still 1. Similarly, for 2s1, I have alpha 1 and beta 1. 2px, and you get the idea. So these are, two solutions, and these are 8 and so on. So now degeneracy is 2n square. So these, by the way, are called spin orbitals, these ones. Sorry? 2s और 3p है ना, तो 4 ऑर्बिटल्स हैं और 8 स्पिन ऑर्बिटल्स हैं. अच्छा, थोड़ा जरा टर्म्स पे, इसको ये एक स्पिन ऑर्बिटल है, ये एक स्पिन ऑर्बिटल है, ये एक स्पिन. सो देयर आर 2 स्पिन ऑर्बिटल्स, देयर आर 8 स्पिन ऑर्बिटल्स एंड सो ऑन. सो और चूंकि एनर्जी जो है, अगर आप देखें जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, -a² 2m del square चूंकि जो सिमिलरली फॉर बीटा, जो वेव फंक्शन है स्पेशियल और स्पिन पार्ट का, द स्पिन कैन बी फैक्टर्ड आउट, and I can cancel this alpha from both sides, because it's 1 for ms half and 0 for ms not half. So for ms half, this equation is this, so I get the same energy. So energies are not disturbed after including spin and hydrogen atom. The energy of these two orbitals is still 1 over 13.6 electron volt for both, and for all of this it's like 13.6 over 4 and so on. So the energies are the same, only degeneracy have been increased by after we include spin. Okay, Ji? For hydrogen atom. हाँ, नहीं स्पिन तो नहीं करेगा, लेकिन जो टोटल वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन्स के, वो डिपेंड करेंगे. स्पिन और जो अल्फा बीटा है, देयर ऑलवेज डेल्टा फंक्शंस. ठीक है, तो लेकिन वेव फंक्शन यहाँ पे अभी भी प्रोडक्ट फॉर्म में है. सो स्पेशियल spin, spatial spin, spatial spin. Let's now see what happens to the helium atom. So for helium atom, let's start from the ground state. So for ground state, we now have 2 electron. So our wave function is product of 2 electron. Let's see if this is a legitimate wave function that we wrote earlier or not. So that, thing about symmetry or anti-symmetry, we didn't have to worry about that in hydrogen atom. Can you guess why? The fake electron, right? An electron in a potential created by the nucleus. So we didn't have to worry about symmetry, anti-symmetry. But now we have 2 electrons. So this was the ground wave, ground function, and I just wrote, this alpha 1 and alpha 2 with it. The question is this a legitimate wave function? For that, we have to make sure that if we interchange 2 electrons, it's antisymmetric. Is this antisymmetric under exchange of 1 and 2 electrons? No.
Because if I interchange this 1 with 2, 1 with 2, and 2 with 1, 2 with 1, I will end up with exactly the same wave function. There's no minus sign coming out. So not a legitimate wave function for the ground state. Let's see the other one. The other possible, if we can put, beta here or beta here, still not. आप कहते हैं चलो मैं इधर अल्फा लगा देता हूँ, इधर बीटा लगा देता हूँ, फिर भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप 1 2 को इंटरचेंज करेंगे वो वेव फंक्शन ही बदल जाएगा. We want the same wave function with minus sign. So alpha beta या beta alpha is also not a legitimate ground state wave function. There is actually only one possibility, and that is, let me call psi 0. ये वेव फंक्शन ऐसा लिखा है आपके सामने कि अगर आप 1 और 2 को इंटरचेंज करें, यू विल गेट अ माइनस साइन. जी हाँ, नहीं, अल्फा 1 बीटा 2. हाँ जी, थैंक यू. And this, by the way, physically means that, let's say, you have a, so let me put a cross here. This is the nucleus, and there are like 2 electrons, and you find 1 electron. You do a measurement on electron 1, and you found 1 electron. Let's say whatever you found, we call it electron 1. So once you have found it, you know its spin, and you know its wave function, etc. So once you know its spin, let's say its spin is plus half. So let's say this was alpha. So if its spin was plus half, so it means you have collapsed to this part of the wave function, and it means the other electron have a spin minus half. And if you found and its spin was minus half, it means you have collapsed to this part of the wave, because this wave function, you see, it's a superposition of 2 terms. So this product with this and this product with this. So this is a wave function which is a superposition of 2 terms. So when we do measurement, it collapses to one of the states. So let's say it collapses, if it collapses to the product of this and this, then the spin of the first electron is minus half. The spin of the second electron would definitely be plus half. So this is a legitimate wave function, ground state wave function. Fortunately, we don't have to work out the energies again. क्यों? क्योंकि देखें, जो स्पेशियल पार्ट है और जो स्पिन पार्ट है, इट्स स्टिल कमिंग इन प्रोडक्ट फॉर्म. और जब आप इसको उसमें श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट करेंगे, इवन फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसमें स्पिन तो कहीं भी नहीं है. अभी हमने जो हैमिल्टनियन अब तक लिखा हुआ है, वी हैवंट इंक्लूडेड स्पिन. सो मैं इसको जरा दोबारा रिपीट कर दूं कि हमने जो हैमिल्टनियन लिखा हुआ है ना, वो डेल स्क्वायर प्लस वी, इट्स अ वेरी अप्रोक्सीमेट हैमिल्टनियन, because it has ignored the spin and spin orbital interactions. But if you ignore all those and the energies that we have computed for the ground state, it's going to be valid. The only difference is this, that we have a wave function given by this. All right, so let's now go to the excited states of helium. Or do we change the degeneracy of this ground state by including the spin? क्या और कोई ऐसी स्टेट है? जो जब पहले हमने ग्राउंड स्टेट कंस्ट्रक्ट की थी, हमने सिर्फ यही किया था, और वो नॉन डिजेनरेट थी, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी है, दोनों इलेक्ट्रॉन 1s में. हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें कि मैं 2 और 1 को इंटरचेंज कर लेता हूं, तो लेकिन वो मैथमेटिकली इट्स द सेम थिंग. आप अगर यहाँ पे 2 यहाँ पे वाले तो ये इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग, जस्ट वो चीज इधर से इधर से लिखने वाली बात है. सो दिस इज अ नॉन डिजेनरेट स्टेट, और इवन आफ्टर इंक्लूजन दिस इज स्टिल नॉन डिजेनरेट. सो जो ग्राउंड स्टेट है हीलियम की, उसका डिजेनरेसी जो है वो स्पिन के इंक्लूजन से चेंज नहीं हुई. फॉलो करिए मरियम इस चीज को. हमने हाइड्रोजन में जब डिजेनरेसी इंक्लूड की, तो जो हमारी ग्राउंड स्टेट थी, देयर वर 2 पॉसिबिलिटीज फॉर द ग्राउंड स्टेट.
So we have now two states with the same energy. यहाँ पे before spin we had this state and there was only one possibility, and after including spin we have this state, and this is still the only legitimate ground state solution. So even after spin the degeneracy has not changed for the ground state because we still have only one state. अगर excited state की बात करें तो let's say before spin for helium, क्या आपको याद है क्या इसकी थी degeneracy for the excited state? इसकी थी I think 8. If you remember, we solved for the ground state. There was possibilities 1s1, 2s2, right? And then there was this 2px, 2py, 2pz. And then you could have the second electron here and the first here. Okay, and you have 4 more states. So there are 8 states in the second excited state. लेकिन वो सारी की सारी 8 degenerate नहीं थी. If you recall, we were able to, you know, नहीं वो सारी की सारी degenerate थी. But when we included the they were degenerate when we didn't have the electron-electron repulsion. Once we had electron-electron repulsion included, the helium states split into 4 states. So there were some states with the some states were degenerate and some were not. But let's see what happens after spin, after we include spin. So once we include spin, the first excited state, let's say यही वाली जो हमने कंसिडर की थी, अगर मैं इसके साथ अब ये वाला इंक्लूड कर लूं, is this a legitimate ground excited state? No, क्योंकि इसमें अगर हम दोनों पार्टिकल को इंटरचेंज करें तो वेव फंक्शन कुछ और हो जाता है. माइनस साइन तो दूर की बात है, क्योंकि देखें ना ये है, लेट्स से इसको ये 1s1 है तो ये 1s2 हो जाएगा और ये 2s1 हो जाएगा, which is not the same as this. क्योंकि ये जो 1s का मतलब है कि ये एक वो पूरा मैथमेटिकल फंक्शन है जिसके अंदर 1 का मतलब है आपने θ1 r1 φ1 रखा हुआ है, और ये 2s जो है ये एक डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शन है, और 2 का मतलब है उसमें x2 y2 z2 है. तो अगर हम इसमें x1 y1 z1 करते हैं और इसमें x2 y2 z2, तो दे आर टोटली डिफरेंट फंक्शंस नाउ. सो दिस इज नॉट अ लेजिटिमेट functions. And actually you can check that the legitimate functions for this ground excited state are 1s1. इस वक्त मैं जस्ट ऐसे ये आप यूं कह लें कि ट्रायल और एरर से लिख रहा हूँ. soon I will have a systematic way of finding these states. अभी जस्ट ये मोटिवेट करने के लिए. ये देखें ये वैलिड स्टेट है, इसमें आप 1 और 2 को इंटरचेंज करें यू गेट अ माइनस साइन. ठीक है मैं अब मैं आगे जाने से पहले कमेंट करना चाहूंगा, इसका अगर आप स्पेशियल पार्ट देखें ना तो स्पेशियल पार्ट एंटी सिमेट्रिक है और जो स्पिन पार्ट है वो सिमेट्रिक है. लेकिन अगर ग्राउंड स्टेट को देखें तो इसका स्पेशियल पार्ट सिमेट्रिक है कि अगर मैं ये 1 2 को इंटरचेंज करता हूँ ये वैसे का वैसे ही रहता है, लेकिन जो स्पिन पार्ट है वो एंटी सिमेट्रिक है. तो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा एंटी सिमेट्रिक होता है. तो शुरू में बच्चे जब स्पिन पढ़ते हैं तो वो समहाउ ज़हन में गलत बिठा लेते हैं कि हमेशा जो स्पेशियल पार्ट है उसी ने एंटी सिमेट्रिक होना है. ऐसा नहीं है, जो एंटी सिमेट्रिक होना है वो टोटल वेव फंक्शन ने होना है हमेशा. एंड इफ यू राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ स्पेशियल एंड स्पिन पार्ट, और ये भी इन जनरल पॉसिबल नहीं है, बहुत का ऐसा होगा कि बल्कि हम देखेंगे हम हीलियम से लिथियम पे जाते हैं, वी कैंट इवन राइट आवर फंक्शन एज अ प्रोडक्ट ऑफ स्पेशियल एंड स्पिन पार्ट. But if you are able to write your wave function as a product of spin and spatial part, then either of one of them has to be antisymmetric and the other has to be symmetric. अगर दोनों antisymmetric लिखेंगे
तो फिर भी वो लेजिटिमेट वेव फंक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि वो जब इंटरचेंज करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। सो वन सिमेट्रिक अदर एंटी सिमेट्रिक। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्पेशल सिमेट्रिक है या स्पिन सिमेट्रिक है। अब ये जो एक्साइटेड स्टेट है ये एंटी सिमेट्रिक है स्पेशल पार्ट, और ये सिमेट्रिक है। अल्फा 1 बीटा 2 नहीं, क्योंकि फिर मैं जब इंटरचेंज करूंगा ये कुछ और बन जाएगा। हाँ, बीटा 1 बीटा 2 आ सकता है। सो अनदर एक्साइटेड पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट इज ये चीज सेम हो और ये हो जाएगा बीटा 1 बीटा 2। और स्टिल अनदर एक्साइटेड स्टेट इज कि यहां पे हम लिख देते हैं यही वाला, और यहां पे मैं लिख देता हूं 1/√2 अल्फा 1 बीटा 2 प्लस अल्फा 2 बीटा 1। तो स्पेशल पार्ट इन तीनों में सेम है, एक में अल्फा अल्फा अल्फा, एक में बीटा बीटा, और एक में अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। नहीं, ये अल्फा वो, हाँ ठीक है, ये नहीं, इसका हो जाएगा अल्फा 1 बीटा 2 बीटा 1 अल्फा 2। ये तीनों एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, लेकिन इनका स्पिन जो है वो तीनों का सिमेट्रिक है, और इनका जो स्पेशल पार्ट है वो तीनों का डिफरेंट है, वो है एंटी सिमेट्रिक। अच्छा, थोड़ी देर में हम वैसे देखेंगे, चूंकि इनमें ये 1s 1 2s2 आ रहा है, और अगर आप रिकॉल करें तो जब हमने हीलियम की एनर्जीज निकाली थी ना, तो जो पॉसिबल वेव फंक्शन प्रॉपर निकले थे वो एक था ये 1s1 2s2 प्लस के साथ, और एक था 1s1 2s2 माइनस के साथ, और इसकी एनर्जी हमने फाइंड की थी। तो इन तीनों स्टेट की एनर्जी सेम है। सो दिस इज अ 3-fold degenerate state. This is an excited state. Perfect. So the other possible excited state is के ये प्लस हो, और let me write that as well. So the next possible excited state is, so ये में recording हो रही है। Okay. So another possible excited state is 1/√2 1s1 2s2 plus 2s1 1s2, और इसके साथ जो स्पिन पार्ट है वो सिमेट्रिक होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, माइनस। सो दिस इज आल्सो एन एक्साइटेड स्टेट, और इसकी भी हमने जो है वो एनर्जी फाइंड की है। लेकिन ये बस यही है, आप इस तरह की और नहीं बना सकते। सो इसका मतलब है कि 1s और 2s की जो पॉसिबल स्टेट्स हैं वो सिर्फ 4 है। पहले सिर्फ 2 थी जब हमने स्पिन नहीं निकाली हुई थी, सिर्फ प्लस के साथ और माइनस के साथ। सो हीलियम एटम की जो एक्साइटेड स्टेट्स थी वो 8 थी, और जो प्रॉपर निकली थी वो एक था 1s और 2s की 2 थी, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। फिर इसी तरह 2 स्टेट्स बनती हैं 1s और 2p के साथ, s और p के साथ, px, फिर s और py के साथ बनी थी, फिर s और pz के साथ। तो इसी तरह आप वो जो s और p है ना, उनसे ये 4 स्टेट्स आप बना सकते हैं। सो देयर आर 4 स्टेट्स फॉर 1s 2s, देयर विल बी 4 फॉर 1s 2p एंड सो ऑन। और उनमें से वो सारी एंटी सिमेट्रिक है टोटल वेव फंक्शन की बात करें, लेकिन अगर स्पिन को देखें तो इसमें ये स्पिन एंटी सिमेट्रिक है, और उन तीनों में स्पिन जो है वो सिमेट्रिक था। इसीलिए और इनके प्रॉपर नाम है, इनको इसको कहते हैं सिंगलेट स्टेट।
और वो जो स्टेट थी ना इस तरह के वाली, और वो इधर सारा वही था 1s 2s माइनस 2s 1s वाला, इसको कहते हैं ट्रिपलेट स्टेट। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इन दोनों की एनर्जी सेम है, ठीक है। टू दी फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन जो हमने लास्ट टाइम निकाली हुई है। सो हीलियम में जब हमने स्पिन डाली है तो एनर्जीज अभी भी चेंज नहीं हुई, अलबत्ता अब डीजेनरेसी चेंज हो गई है, लेकिन डीजेनरेसी थोड़ी वो सिस्टमैटिकली उस तरह से चेंज हुई जिस तरह के हाइड्रोजन एटम की डीजेनरेसी के 2n² हो गया, उतनी सिंपल नहीं है। जो ग्राउंड स्टेट है वो पहले भी नॉन डीजेनरेट थी, अब भी नॉन डीजेनरेट है। और जो एक्साइटेड स्टेट है, जो 1s 2s के कॉम्बिनेशन है, वो 3 और 1 चली गई, एक स्टेट 3 फोल्ड डीजेनरेट होगी और एक 1 स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट और सिंगलेट स्टेट। इसी तरह जो 1s 2p वाली कॉम्बिनेशन है 2px की, वो भी एक सिंगलेट स्टेट होगी और 3 ट्रिपलेट स्टेट, सिंगलेट स्टेट ट्रिपलेट स्टेट। एंड इट एक्चुअली doesn't have consequences in terms of individual energy, लेकिन हम बाद में when we will study टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, और उसमें वी विल डिस्कस द ट्रांजिशन रूल्स के किन किन लेवल की ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो जस्ट यू नो गिव यू, सो दिस इज 1s 1s स्टेट, सो ये हीलियम की है। और इसमें ये सिंगलेट थी, राइट वो जो बोर्ड पे लिखी है, क्योंकि इसमें जो स्पिन पार्ट था वो एंटीसिमेट्रिक है। सो ये सिंगलेट स्पिन स्टेट है जस्ट लाइक दिस, उसमें 1s और 1s था, ठीक है। इसमें अब ये है 1s 2s वाला पार्ट, और अब इसके बन गई है एक एक ट्रिपलेट स्टेट है और एक सिंगलेट स्टेट है। अभी तक इनकी एनर्जी से इनकी एनर्जी सेम है, ठीक है। लेकिन ये मैंने जस्ट लाइन ऐसे अनफॉर्चुनेट ड्रॉ कर दी है, बाद में वी विल स्टडी वेज टू स्प्लिट दीज लाइंस, बट राइट नाउ देर ऑल सेम। They don't have right now consequences in terms of individual energy, but they do have consequences in terms of transition. ये सिंगलेट है और ये ट्रिप, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पे चला जाता है, so it's not going to decay easily to this state as compared to the transition from here to here. So singular to singular transition is what we call allowed, and triplet to singular transition what we call not allowed. ये थोड़े से दोनों वर्ड्स असल में मिसलीडिंग है। इसका मतलब शायद लोग ये ले लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया तो इट कैन नेवर कम डाउन, ऐसा नहीं है। नॉट अलाउड का मतलब है द डिके टाइम इज वेरी वेरी हाई, आई थिंक इट्स एक्चुअली of the order of minutes as compared to less than microsecond for usual thing. So this transition is allowed and this is not allowed. So because of conservation of angular momentum that goes with the light. Okay, so let's get back. So even for helium atom, the impact of spin inclusion is only on degeneracy, and the energies that we have calculated so far are still applicable. Albatta jo states hain, they have split. So any questions so far before we go to lithium? Okay. अच्छा, अब तक ये हुआ है फॉर्चुनेटली कि जो हमारा टोटल वेव फंक्शन है, we were able to write it as a sum of spatial part R1, R2 and the spin part. Let's call it phi, ms1, ms2 and so on. And we had to make sure that either this or that is antisymmetric and the other one is symmetric, and we were okay. But in general, when you have more than one particle,
it may not always be possible to write the total wave function as just a product of these two parts by making one symmetric and the other antisymmetric. And we have to resort to a linear combination of product terms of this psi and phi type terms. Essentially अभी भी बात तो वही थी इन जनरल, क्योंकि आप अगर इनको मल्टीप्लाई करके टर्म वाइज लिखें तो ये सारी कितनी टर्म, 4 टर्म बनती हैं, इसका प्रोडक्ट्स के साथ, इसका उसके साथ, इसका, तो this is just a sum of 4 terms, but it is still possible to divide it into spatial and the spin part. But when we have more than 2 electrons, actually we can check that it's not possible to separate the total wave function into the spin and spatial part. So the question is, what is a systematic way of finding the legitimate wave functions? And actually in 1930, Slater proposed a way of finding the legitimate wave functions. They are called Slater determinants. And the determinants, are given by this. So let's say you have n particles. So 1 over n factorial for normalization. And then we can write something like this. So let's say 1s1, 2s2, 3s3, and so on. So one term, and then 1, 1, and then let's say 1s2, 2s2, 3s2. It has to be alpha 1 and terms like this. And then this will satisfy the conditions of antisymmetry always. The trick is that you specify the orbitals for different electrons in different rows. So when you interchange 2 electrons, it is equivalent to interchanging the rows of a determinant. And whenever you interchange the rows of a determinant, you get a negative sign. And if there are, n particles, there are going to be n factorial term in the determinant, which means that to normalize a sum of n factorial orthogonal terms, you have to divide by square root of n factorial. Let me give you concrete examples. For example, for helium atom, we can have 4 determinants: 1s1, alpha 1, 2s1, alpha 1, 1s2, alpha 2, 2s2, alpha 2. So another possible wave function that satisfies this is 1s1, alpha 1, 2s1, beta 1, 1s2, alpha 2, 2s2, beta 2. So you choose the orbitals where you want to place the electron, and then you write the first row, and then you just keep replacing 1 with 2, 3, 4, and so on. So suppose, we are putting 1 electron in 1s and the other electron is 2s, and we want to give them different spins. So 1s and alpha, 2s and beta. So here I wanted to put 1 electron in 1s and the other electron is in 2s. So and wanted to give both of them the same spin. And similarly, let's say I have 1s1, beta 1, 2s1,
beta 1, alpha 1, and then 1s2, beta 2, 2s2, alpha 2. और ये जो है ये सिर्फ एक जो एक्साइटेड स्टेट है उसकी बात हो रही है. एंड द लास्ट वन, ये अभी मैं 1s और जो 2s एक्साइटेड स्टेट है ना इसके लिए लिख रहा हूं. D4 और क्या पॉसिबिलिटी, अभी तक मैंने जो पॉसिबिलिटीज लिखी हैं कि एक इलेक्ट्रॉन 1s और दूसरा 2s पे, ये तो सब में सेम है. पहले मैंने दोनों की स्पिन अल्फा रखी है, फिर एक की स्पिन अल्फा दूसरे की बीटा, फिर पहले की बीटा दूसरे की अल्फा, और अभी चौथी पॉसिबिलिटी है कि दोनों की स्पिन बीटा बीटा हो. And then the second electron, and you can check कि अगर आप इस डिटरमिनेंट को खोलें, ये D1 कौन सी स्टेट बनती है? So D1 is actually that alpha 1 alpha 2 state. और अगर D2 को खोलें तो ये कोई जो हमने स्टेट्स लिस्ट की उनमें से कोई नहीं बनेगी. D3 वाली भी कोई नहीं बनेगी. D4 को खोलें तो ये वो जो अल्फा बीटा वाली स्टेट लिखी हुई जो बीटा बीटा वाली लिखी थी ना ट्रिपलेट के अंदर, वो बनेगी. जो दूसरी दो स्टेट्स आएगी ना, एक ये सिंगलेट और एक वो वाली, वो है दिस वन इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ D2 एंड D3, और जो वो वाली है वो आई थिंक D2 माइनस D3 है. तो जो 1s और 2s एक्साइटेड स्टेट है, इसके लिए जब आपने पॉसिबल वेव फंक्शन लिखे हैं तो दे आर गोइंग टू बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्लेटेड डिटरमिनेंट्स D1 D2 D3 D4. इसी तरह जब 1s 2p की बात करेंगे तो उसके लिए भी चारों डिटरमिनेंट्स है वो आप फाइंड कर सकते हैं. अब अगर लेट्स लीव लिथियम फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. इसी तरह अगर आपने ग्राउंड स्टेट की बात करनी है तो ग्राउंड स्टेट में यू हैव 1s स्क्वायर 1s तो उसमें ये 1s और यहां मैं 1 लिखता हूं, ये अल्फा 1, तो ये वैसे 0 हो जाएगा, राइट? ठीक है ना, ये कॉलम इस कॉलम के बराबर हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे 1s कर देता हूँ. इसी तरह इसके अंदर अगर ये 1s करता हूं तो ये डिटर्मिनेंट भी 0 हो गया. तो जो इसलिए जो 1s का सोल्यूशन है ना वो D2 और D3 का लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा. यू कैन चेक. सो ये जो सिलेक्टेड डिटर्मिनेंट्स हैं, दे आर अ सिस्टमैटिक वे टू फाइंड द फंक्शंस दैट हैव दिस प्रॉपर्टी ऑफ एंटीसिमेट्री. ये थोड़ा सा भी वो गेम हाथ से निकलने वाली लग रही है, बहुत सारी टर्म्स आती जा रही है. जब हम लिथियम पे जाएंगे, वी हैव 3 इलेक्ट्रॉन, जो हमारा डिटर्मिनेंट है जो वो 3x3 मैट्रिक्स का बन जाएगा. सो यू गो टू 4, 4x4. सो सून वी विल लर्न ऑफ सिस्टमैटिक वेज ऑफ राइटिंग दीज डिटर्मिनेंट्स, और उनके साथ जो काम करना है वो भी. लेकिन ये जो एंटीसिमेट्री है की रिक्वायरमेंट है, ये जो कैलकुलेशंस है उनमें बहुत ज्यादा तंग करती है. But that's how the world is. We can't do anything about it. Okay, कोई क्वेश्चन? जो लोग ऑनलाइन है उनका कोई क्वेश्चन है? No. ठीक है. अच्छा, आज पे जो है वो आपका मिड टर्म के प्रॉब्लम्स भेज दूंगा, तो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, और नेक्स्ट मंडे तक आप लोगों ने बाय हैंड क्लास में डिलीवर करना है उसका सोल्यूशन. एक एक प्रॉब्लम है, और मैंने कोशिश की है कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स कम से कम हो,
कोई शायद 2-4 लोग ही होंगे जिनको वो जरूरत पड़ेगी। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम इंडिविजुअल प्रॉब्लम है वो अपने पेपर पे सॉल्व करके तो देना है, और जो नेक्स्ट मंडे है उससे आप क्लास में आके नहीं नहीं, मैंने लिस्ट बनाई है, आई सेंड इट आउट टुडे। जी जी। सो फॉर मिड प्रोजेक्ट जस्ट इंडिविजुअल प्रॉब्लम सब लोगों ने सॉल्व करना है, जो फाइनल होगा उसमें यू विल बी एक्सपेक्टेड टू गिव अ प्रेजेंटेशन एज वेल। कम होंगे क्योंकि मैं देखा काफी जो लोग हैं वो नहीं है, और लोगों को मसला भी आ रहा है, वो पूछने बार बार आते हैं, तो फिर कुछ को अगर मैं दूंगा कुछ को नहीं, तो वो थोड़ा यूनिफॉर्मिटी का भी इशू होता है। अलबत्ता उस लिस्ट के अंदर मैंने ऑप्शन भी रखी है, अगर आपको अपना प्रॉब्लम पसंद नहीं है तो आई हैव प्रोवाइडेड अनदर 8 प्रॉब्लम्स लिस्ट, आप उनमें से चूज कर सकते हैं, लेकिन वो सारे जो हैं वो कंप्यूटेशनल हैं, अगर आप उनमें से चूज करना चाहते हैं। ओके, सो हाफिज।